This video is third part of PIC microcontroller programming. We can program our microcontroller in assembly language as well as in C language. In C language, the writing code is very short and at last it compiles and makes hex file which is fed into our IC or microcontroller. The advantage of C language is that the logics, language and commands are same for all microcontrollers, whether it is AVR or PIC or any other microcontroller. We can program any controller in C, but their registers, their special function registers will be different. But in assembly language, every controller has its own personal assembly language. For example, PIC has its own assembly language, AVR has its own, ST has its own, 8051 has its own. But in C language we can program any of the microcontroller. But still in C we have to use registers of the different microcontrollers. For example, there are trace registers in C, in PIC, and DDR registers in AVR. So the registers are different. Now I will tell you in both languages, whether in C or in assembly language, I will show you the main difference and how to convert assembly into C and C into assembly language. For example, first of all, we go through the microcontroller of PIC, a very famous microcontroller, 16F8778 8-bit, having 40 pins. It has maximum all functions, UART, I2C, SPI, PWM, etc. etc. But all the protocols should be understood step by step. तो सबसे पहले हमें कोड प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए, सबसे आसान, और स्टार्ट ही वहाँ से होता है। वो हमें असेंबली लैंग्वेज और सी लैंग्वेज दोनों में ही आनी चाहिए। तो किस तरह से हम MP11 इनका कंपाइलर है फेमस, असेंबली के लिए भी है और सी के लिए भी है। तो असेंबली और सी दोनों में हमें कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे प्रोग्राम लिखना है, कैसे कंपाइल करना है, कैसे एरर निकालने हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम असेंबली में ब्लिंक का लिखता हूँ, तो आप देखिए, और नाउ इन सी in assembly. In C we write move LW 0x05, any data which you want to send, move WF code B. In this is assembly and this is C. In C it will be written very shortcut, code B is equal to 0x0. In assembly language we have to send data on working register first of all. Means we have sent data 0x5 to the working register, then working register to file. Move WF means move data from working to file, and that file is code.
So this is the main difference of C and assembly language. How to make ports input and output. In PIC, if we write move LW 0x00, move WF trace B, it means move data 0x00, move WF trace B. ट्रेस बी पे हमने 00 डाटा भेज दिया, यानी हमने ट्रेस बी रजिस्टर को, एक डाटा डायरेक्शन रजिस्टर है जो मैंने सेकंड पार्ट में बताया था, अगर हम इसे 00 कर देते हैं तो ये आउटपुट बन जाता है, इट बिकम्स आउटपुट. In C it is very simple, trace B is equal to 0x0. If we want to make the data register input, then we have to write move LW 0xFF, move WF trace C. Trace C is equal to 0xFF. Now this register has become, it becomes input. Now what is the actual meaning of input and output? Input means now we can apply switches or sensors on port C, and output means we can apply LEDs, relays, displays on output register trace B. First of all, we have to make all the registers input or out. This command is the making output for whole register trace B, and this is whole register for trace B. We can also make 1 or 2 bits इनपुट, और हम 1 और 2 बिट को भी इनपुट और आउटपुट बना सकते हैं, जैसे move LW 0x01, move WF trace B. अब हमने ट्रेस बी की सिर्फ एक ही बिट को हाई किया. एक ही बिट को हाई करने का मतलब हमने सिर्फ एक बिट इनपुट बना दिया, बाकी सारी आउटपुट बना. ओनली 1 बिट इज इनपुट, दैट इज 0 बिट नाउ. रेस्ट ऑल आउटपुट्स, बाकी सारी आउटपुट्स बना दिए. तो हम जिस तरह चाहे बिट वाइज भी इनपुट आउटपुट बना सकते हैं, और पूरे रजिस्टर को भी इनपुट आउटपुट बना सकते हैं. हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही तब होएगी, पहले हम फैसला ये करेंगे कि किस पिन को इनपुट बनाना है, किस पिन को आउटपुट बनाना है. एग्जाम्पल के तौर पे पहले आपको अपना हार्डवेयर पता होना चाहिए. मान लो ये PIC 877A है, ये आपका पोर्ट B है, इस पे आप LEDs लगाना चाहते हैं. तो इसको आपको आउटपुट बनाना होगा, और ये पोर्ट C है, इस पे आप स्विचेस लगाना चाहते हैं. तो आप स्विच प्रेस करके इसको इनपुट दोगे, तो ये वाला पोर्ट C है अगर, तो आपको इसको इनपुट बनाना होगा. तो ये इनपुट बनाना है, ये आउटपुट बनाना है. आउटपुट तभी हमें अपने फंक्शंस के मुताबिक प्रोग्राम लिख पाएंगे. तो ये है PIC में किसी भी रजिस्टर को इनपुट और आउटपुट बनाना, और अलग अलग बिट्स को भी इनपुट और आउटपुट बनाने के लिए तो कमांड्स.